What's up people, good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching the video at. This is your host Ganesh and you're watching my channel Royal Enfield. Welcome back to the channel once again. Yeah, I know it's been so long that you haven't seen me, I haven't seen you guys. And today's video is all about installing a new handlebar. As you can see in the thumbnail, I got a new handlebar from Mototech, which I got from Goa, Romania. And that is what I'm going to install on my Enchantress right now. So here we go. वैसे अनबॉक्सिंग तो हो गई थी गोवा RM में ही. If you can see this, MRP is 1500 approximately, which I got for 1200 due to it was an offer in Goa RM. Let's quickly open this and let me show you the handlebar. So again थोड़ा सा inclined है as compared to the one which I have already on there on my bike. हाँ, मैंने बाइक को ऐसे सजा के रखा हुआ बिकॉज बहुत डस्ट उड़ती है यहाँ पे, थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है. अगेन बैक टू दी अनबॉक्सिंग. दिस इज़ हैंडलबार फ्रॉम मोटोटॉक विच विद सम नाइस ग्रिल वर्क ओवर हियर. लेजर टेक्निक से यहाँ पे ग्रिल वर्क किया हुआ है. एंड लेट्स क्विकली अनरैप दिस. दिस इज गोना बी अ टास्क एंड अनरैपिंग इट अलोन. ओके, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये पेंट किया हुआ मोटोटॉक लिखा हुआ होगा यहाँ पे www.mototech.in, बट ये स्टिकर है. नो इश्यूज, आई remove it out and will put my channel's name or Instagram ID out over here. So this is how it looks. Okay, let's go to the garage and meet Ravi and इसको डाल देते अपने बाइक के ऊपर. That's called देसी जुगाड़ बाइक. So I have also installed fog lights on my bike, जिसका वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है. बहुत ही जल्दी यानी इसके बाद मोस्टली उसी का ही वीडियो पोस्ट करूँगा. So this is my handlebar from Barrel Exhaust का Attack is the model name. If you can see, it's inclined towards me when I am riding. तो ये actually cruiser, you can call it a cruiser handlebar because वो cruiser वाला ही feel देता है. And this handlebar, once I install it, I'll show it to you how it looks on it. तो जस्ट फॉर कंपैरिजन साइड बाय साइड में दिखाई देता हूँ. 1 second. सो इफ यू कैन सी, द एग्जिस्टिंग वन इज़ वेरी मच इंक्लाइंड देन दी वन विच आई एम होल्डिंग राइट नाउ फ्रॉम मोटोटॉक. एंड लेंथ मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. या द लेंथ इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. एंड इफ यू कैन सी दिस पोर्शन, the stock one is very much inclined towards me and the new one is a little bit straight. So साइडलिंग के लिए इट विल बी अ गुड ऑप्शन. बिफोर हेडिंग टूवर्ड्स गैरेज, एक बात बताना भूल ही गया. द रीज़न वाई एम चेंजिंग द हैंडल बार इज़ बिकॉज जो स्टॉक हैंडल बार है, व्हाट हैपेंड इज़ व्हेन आई गॉट दिस हैंडल बार ऑलमोस्ट 1.5 year बैक. गाड़ी नई नहीं थी, हैंडल बार भी नया नया था. एट द सेम टाइम व्हाट हैपेंड इज़ कि आई वॉज समवेयर नियर बाय द हिसर एंड बाइक स्टैंड से उतार के, आई मीन लाइक आई वॉज पुटिंग इट ऑन दी साइड स्टैंड एंड सडनली व्हाट हैपेंड इज़ कि बाइक अपोजिट साइड में गिर गई. दैट मीन्स ऑन दी राइट हैंड साइड पे गिरी. गाड़ी खड़े खड़े स्टैंड के ऊपर थी. दैट वाज दी वन इंसिडेंट जहाँ पे गाड़ी खड़े खड़े एक बार गिरी है. उसके बाद अगेन मैंने वॉज इन लद्दाख इन 2021. दैट टाइम ऑल्सो व्हाट हैपेंड इज़ कि ऐसे ही मस्ती करते करते बाइक अगेन राइट साइड पे ही गिरी थी खड़े खड़े. तो कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ. लेकिन ये जो स्टैंडिंग पोजीशन में गाड़ी गिरती है, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस काइंड ऑफ ह्यूज हैंडल बार्स, नॉट द स्टॉक वन, द ह्यूज हैंडल बार्स, उसका एक ही डिमेरिट ये होता है कि आपका जो टी रॉड है उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है. तो वो भी एक इशू है. मुझे लग रहा है कि गाड़ी जो राइट साइड में मेरी भाग रही है, दैट कुड बी वन पॉसिबिलिटी कि टी बेंड हुआ रहेगा. बट देन आई नीड टू गो एंड चेक दैट. एज वेल एज फॉर हैंडल बार तो टेढ़ा हुआ है, वो आई कैन सी. वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हैंडल बार कितना टेढ़ा दिख रहा है. अच्छा,
ओके, आई वाज शोइंग यू गाइस कि हैंडल थोड़ा टेढ़ा है. 1 second. So let me. Okay. Now if you can see that portion over there, वो पीछे की तरफ दबा हुआ है. वो जब मैं राइट साइड मतलब when I'm sitting on the bike तो वो मेरा राइट साइड है एंड दैट पोर्शन उस तरफ मतलब मेरी तरफ नॉट मेरे करंटली मेरे अपोजिट साइड में उस तरफ जो है बेंट हुआ है. सी यू कैन फिगर आउट द डिफरेंस. सी ना जो लेफ़्ट साइड वाला है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, मीन्स नॉर्मल पोजीशन पे है, एंड राइट साइड का जो पोर्शन है वो थोड़ा ऊपर की तरफ है. एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉट जो साइड का जो यहाँ पे वेट होता है हैंडल बार एंड वेट्स होते हैं वो लाना भूल गया मैं. उसके लिए मुझे वापस घर पे भागना पड़ेगा. आई गो एंड गेट दैट. पहले बाइक जो है वो सर्विस सेंटर में जाके छोड़ के आता हूँ. सर्विस सेंटर नहीं, रवि के पास जाके छोड़ के आता हूँ. एंड ये दूसरा देसी जुगाड़ है. दिस स्टोन्स ओवर हियर क्योंकि सिंस दे इंक्रीज द हाइट ऑफ दिस फुटपाथ मेरी गाड़ी इजीली उतरती नहीं है वहाँ से, तो मुझे वही जुगाड़ करना पड़ा. ओके, वहाँ पे कुछ स्टोन्स रख के देन आई कैन गेट डाउन माई बाइक फ्रॉम देयर. So since I'm making videos after this long, I installed few more things on my bike. I would like to show it to you once again. Let me turn this off. Okay, so ये जो gear lever shifter है which is made of a rubber and it has a flat surface. If you can नीचे से दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे बस थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंक्लाइंड है. ओके, आई कैन रोटेट इट. हाँ, तो ये नीचे से फ्लैट है. सो पीपल हु नो मी द स्नीकर्स especially white sneakers, that's the reason why I got this one. I think इससे जो मेरे white sneakers है while shifting the gears वो गंदे नहीं होंगे and I have used it, गंदे नहीं होते. तो this is a good one. इसका जो लिंक है वो I'll put it in the description box below. I bought it from Amazon for 170 rupees. So काफ़ी cheap है and after all they are saving your sneakers worth thousands of rupees, so it's really worth. Apart from that, again installed side stand extender which was from a local brand. I'll put down इसका भी link in the description. This cost me 799 rupees. अभी तक तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जिससे I can say the product is not worth. It's really good. You can give it a try. Installation काफ़ी easy है. Basically it has this 3 layers of metal. Aluminium है शायद से. This 3 layers 1, 2 and 3. तो जो ऊपर वाला पोर्शन है you have to कीप इट असाइड. नीचे के दो जो है प्लेट्स उसके अंदर आपका साइड स्टैंड जो है वो जाएगा एंड जो थर्ड प्लेट है वो ऊपर से लगेगी. एंड देन यू हैव टू जस्ट सिंपली पुट दिस स्क्रूज और नट्स, यू कैन से. दैट्स इट. प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल फॉर दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर मॉडिफिकेशन. येस दी फॉग लाइट्स, बट देन फॉग लाइट्स का वीडियो इसके बाद आएगा. सेकंड इसके बाद जो वीडियो डालूंगा वो उसमें फॉग लाइट्स का इंट्रोडक्शन, उसमें फॉग लाइट्स का जो है डिटेल्स आई विल प्रोवाइड इट टू यू एंड विल शो यू हाउ गुड दे आर ऑन हाईवेज एज वेल एज इन सिटी. दैट्स इट. लेट्स नाउ गो टू द गैरेज. We have Ravi already here. He have started installing the handlebar. क्या रख इधर, ये चेंज करने का, इसका मेटल वेट डालने का है. Installation process is similar to the old video that I posted. For that you will see the I button link in the I button somewhere on the top, and that's the reason why I'm not shooting the installation process, but once it is installed I'll show you how it is installed. Realize that the horns are not working properly. एक low बज रहा है, एक high बज रहा है, तो I had some extra pieces of horn at home. Both are different. तो ये इंस्टॉल करके देख रहा हूँ. इसका सेटिंग कर दिया है मैंने. both are working loud and crisp. and ये जो हैंडल बार के वेट्स है वो भी मेटल वाले हैं, वो भी इंस्टॉल कर देता हूँ. इट्स बेटर ये वाले लगाऊँ क्योंकि इससे बैलेंसिंग अच्छी होती है, एज लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी दिस. तो ये भी लेके आ गया. मैं ज़्यादा ले लिया, थोड़ा सा ऊपर करना होगा. हाँ, ये पोजीशन ठीक तो लग रहा है. सैडलिंग पोजीशन इज़ ऑल्सो गुड.
हाँ सेटिंग ना, सेटिंग फाइनल है। सेटिंग फाइनल है ना? हाँ लुकिंग है ना? हाँ टाइट कर दे। We'll take a spin around and we'll see if the position is comfortable or not. ऐसे देखने में तो मतलब बैठ के देखने में तो ठीक लग रहा है, बट चला के देखने में फ़र्क पड़ता है। तो लेट्स टेक अ स्पिन एंड सी हाउ इट वर्क्स। So guys, that's all for the day. The handlebar installation has been done, and another thing we have installed is the side stand extender and the what do we call this? The gear lever shifter, which is a bit good for your sneakers if you are a sneakerhead like me. And if you like the video, then make sure you hit that like button, and if you are new to the channel, then make sure you subscribe to Beardo on Enfield. Pata hai ulta hai. So yeah, that's all for the day. Do let me know in the comment section below if you like the video, and thank you so much for watching. Ride safe and take care.